On February 20, the Maharashtra Assembly unanimously passed a bill granting 10% reservation in education and jobs to the Maratha community. की एकमताने आजचं हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आपण जो निर्णय घेतलेला आहे त्याला एकमताने आपण मान्यता देऊया आणि एकमताने हे विधेयक मंजूर करावं अशा प्रकारची विनंती मी आपल्याला करतो. The reservation bill was passed based on the Maharashtra State Backward Class Commission report that identified the Marathas as socially and educationally backward. However, there are concerns about the new bill and whether it will clear the legal test of the Supreme Court or not. Before this new bill, in 2021, the Supreme Court struck down a bill that provided 16% reservations to Marathas. One of the reasons the apex court cited is that reservations cannot cross the 50% mark. The current reservation bill, which provides 10% reservation to the Maratha community, crosses the 50% cap and takes the state overall quota percentage up to 62%. So the question here is, on what basis has the current Maharashtra government been able to make a 10% reservation to the Maratha community, despite knowing that the reservation will cross the 50% cap? Let's find out. The bill that was struck down by the Supreme Court in 2021 was drafted based on the report of the Maharashtra Backward Class Commission headed by retired Justice M.G. Gaikwad. In 2021, a 5-judge bench of the Supreme Court noted that the Gaikwad Commission report had certain shortcomings and the Commission's conclusions was not borne out of the data and material before it. So what difference did the state government make this time? As mentioned earlier, even this time the reservation bill was drafted based on a report of the Maharashtra State Backward Class Commission headed by retired Justice Sunil Shukre. As per the new bill, it had noted all Supreme Court observations it had made in 2021 on the Gaikwad Commission report. As per the bill, the Commission had collected data from 1,58,20,264 households based on the study by the Commission on various aspects regarding Maratha community, the empirical, quantifiable and contemporary data, facts and statistics set out therein, decided that the Maratha community is a socially and educationally backward class and shall be specified as such under Article 342A(3) of the Constitution of India and to provide reservation for the class under Article 15(4), 15(5) and 16(4) of the Constitution. As per the report findings, exceptional circumstances and extraordinary situation exist and it warrants granting reservations to the Maratha community over 50%. आज मराठा समाज के लिए एक बहुत खुशी का दिन है. पिछले कई सालों से उनकी मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले और आज ये सरकार ने निर्णय लिया है मराठा समाज को 10% आरक्षण देने का. और निश्चित रूप से ये मराठा समाज सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है. ये जो बैकवर्ड कमीशन जो है स्टेट बैकवर्ड कमीशन इन्होंने सिद्ध किया है. ये बहुत ही एक्सटेंसिव और डिटेल में डेटा एम्पिरिकल डेटा कलेक्ट हुआ है और 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास से ये डेटा कलेक्ट किया है. और निश्चित रूप से ये रिजर्वेशन जो है ये कोर्ट में भी ये टिकेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिए थे, जो खामियां निकाली थी, उसे ध्यान में रखकर ये डिटेल सर्वे किया है. इसलिए निश्चित रूप से कोर्ट भी ये सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा क्योंकि ये मराठा समाज के कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कई लोगों ने आत्महत्या की हुई है और इसलिए ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी. ऐसे समय में सरकार ने ये उचित निर्णय लिया हुआ है. ओबीसी समाज को कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए, अन्य समाज के ऊपर अन्याय नहीं करते हुए ये मराठा रिजर्वेशन देने का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया है. However, after the bill was cleared in the two houses, Maratha quota activist Manoj Jarenge-Patil said that the state government has betrayed the Maratha community. मराठ्यांचं कुणबी आरक्षण हे हक्काचं आरक्षण आहे आणि ज्यांना मिळणार, ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी सगळ्या सोयऱ्यांची अधिसूचना आहे, त्याची अंमलबजावणी. मराठ्यांच्या पोरांना राज्यापासून केंद्रापर्यंत आरक्षण मिळतं आणि मराठ्यांचे पोरं मोठे होतात. ही मागणी आहे मराठ्यांची. तुम्ही ही मागणी सोडून दुसऱ्याच मागणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवलं आणि तिसरीच मागणी घेतली आणि अधिवेशन यासाठी बोलवलं म्हणून सांगता, हे चालणार नाहीये. याला दुसरा काही मार्गच नाही, फसवणूकच म्हणलं जातं. किती दिवस फसवणूक करणार तुम्ही? तुम्ही अधिसूचना काढली आणि आता तिची अंमलबजावणी नाही करणार, हे कुठं शक्य आहे? अधिसूचना काढलीच कशाला? सरकारी का कोणी तुम्ही? Even the opposition sought clarification on whether the reservation will survive the test of law.
ये जो 10% का आरक्षण का बिल लाया गया, इसमें कोई भी कानून के तौर पर टिकने वाला नहीं है। इसके पहले भी 2 बार ऐसा बिल लाकर आरक्षण का प्रावधान किया था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में कचरे के डिब्बे में डाला गया। फिर से एक बार 19 में जो किया था वोट लेने के लिए, इलेक्शन निकालने के लिए, आज भी ये सरकार ने आने वाला पार्लियामेंट का चुनाव निकालने के लिए ये बिल लाया और 10% का आरक्षण दिया। ये कोई भी किसी भी तरह से किसी को मान्य होने वाला नहीं और मराठा समाज को ये बिल का फायदा होगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। Meanwhile, the state government had earlier issued a draft notification which stated that Sage Soire, blood relatives of a Maratha with records to show he belongs to the Kunbi community, would also be recognized as Kunbi, an agrarian community that enjoys OBC quota. However, the decision had upset OBC leaders who opposed sharing the space with the Marathas under the OBC category. One must wait and watch. Will the Supreme Court approve the latest reservation bill? Will the protest led by Jarenge-Patil continue among the Maratha community? And when will the state government decide to implement the draft notification allowing Marathas to use Kunbi certificates to avail OBC benefits?